formally start our lecture. This time is lecture is about the inverter circuits. It's in continuation with the last and the previous lecture. I hope you are listening me clearly and my slide is visible to you. So now we have to start. Please respond me. Am I uh, uh, listen? Am I being listened to you clearly? Yes, 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 And my screen is being shared to you yes. clearly. Thank you very much. So we have to start, and this lecture is very easy lecture. As I said before, that I think we did something in the lecture number 27. I must have to first review the lecture number 27. And, okay, this was the last time we did, and we see that the definition of the inverter is, is very simple. We have seen in the just it's a review. Inverters are the it's the DC to AC converter. This is just I want to show you. This is very important that the inverter is this circuit only, and it's not more than this one. So this is very good thing that if you want to consider, if you want to have create an image of an inverter in your mind, then just sketch this value. Take a DC value, okay? This is the battery value, and just place two contacts, first for the plus and second for the negative. This is your inverter. This is absolutely your inverter. And the inverter is nothing more than this one. The rest of the things are just the controlling of the base current or the gate current or the controlling of the devices and the connections of the load. Okay, so this is the inverter circuit. I shown you before, and this is very important. That's why I'm repeating this one. And what do you have to do? You just have to connect the load. This is the inverter is this one. And what you have to manage, you have to manage how you can connect your load with this inverter. One technique is to connect this load, and then you have to change this. So this is the game of the connection of the load with this basic inverter circuit. So please keep in mind, and you need to understand that okay, this is the plus terminal. So this this side of the load will have plus sign, and this side of the load will have minus sign. And similarly, if you reconnect, if you rearrange this one alternatively and keep it repeating the changing of this switches continuously, then you are getting the AC output. That's simple definition of the inverter circuit. If you have any question, you can ask. So in this circuit, if you connect your load, this terminal of the load is now connected with the minus, and this second terminal of the load is connected with the positive. So this will be the voltage at this load will be positive plus minus with respect to this point T1. Okay, we always, when we talk about the voltage, we always take a reference, and this time the reference is T1. In some books, some it is written as A and B. Okay, load 1 or load 2. So this in reference with this plus sign. So this is the plus voltage. So this is in reference with the T1. This voltage will also be measured with reference to the T1. So if you measure reference to the T1, this is plus, this is minus. Okay. So this is the basic review of the, and we generated two types of the voltage.
This is the square wave voltage, okay, because this table connect these switches in this status 1 and 2. So for this status 1, 2, we have seen this thing before, and we have to go quickly, and then we review about the step, okay, the step wave output. So the output in this case is the step wave because we have managed the switching of these transistors in this way. So this was the step wave we discussed before. And in a step wave, I have shown you that this is differ with the previous one because the previous one has direct jump from plus supply to minus supply, but this has a step. So this is much better than previous one. And what we have also discussed that this is somewhat it just close to the, it's not very close, but just we can say it is slightly, it is a bit closer to the sinusoidal voltage. So the target is what we have seen. Keep in mind that when we talk about the inverter, we must have to mention its three characteristics. Number one, its magnitude. Number two, its frequency. Number three, its shape. So always remember the frequency. We have to build such an inverter where the frequency can easily be changed. Okay. All these parameters must be controllable. Means if we talk for the magnitude, so the magnitude can be variable, can be controllable. Whenever we want to make the higher voltage, we can, lower we can. You see, similarly, the frequency, whenever we want to regulate the control, we want to increase or decrease the frequency, you must have to build an inverter that can have these facilities. Similarly, for the shape, but for the shape, we always try to make the output shape, output voltage shape as close as to the sinusoidal voltage. These are the basic review of the last lecture, and we also have shown you, basically this is the inverter circuit, and we always use this diode as a freewheel diode, and we will see its function when we will discuss about the RL load. This time the load is only the resistive load. This is R. And we discussed these things. We have shown you these graphs, these waveforms, the circuits and the waveform. So this is again this step wave. Probably this is the difference between, okay. So the difference between this one and previous one is that this is the full bridge inverter S. Okay. So and always remember the inverter in the full bridge, we use 4 control switches. In this case, it has shown the T1. So the T1 is here. So T1, T2, T3, T4. And these are alternatively connected, T1 and T2. So whenever T1 will turn on simultaneously, we also give signal to T2. And while these two will remain off, and vice versa. Okay, probably you know about all these things, but I must have to review these things. Operation of half bridge with resistive load we have. I think मैंने ये आपको शायद नहीं करवाया था. Last time we just ended with this slide. Okay, so this is again the same circuit. Operation of half bridge inverter with resistive load. So what is this? This is the inverter, as I shown you before. This is the inverter. यहाँ पर क्या क्या है? We need 2 separate supply. So इन्होंने क्या क्या in order to probably maybe suppose कि ये अगर आपके पास 200 volt है, then we want to have 100 volt here and 100 volt here. So what we will do? We will connect same type of the capacitor in series, and these 2 capacitor will be in parallel. So what will happen? This will act as a one load, and this will act as a second load. So if this is plus 200 volt, so the 100 volt will appear across here, and the 100 volt appear across here with the same polarity. So if this is plus Vs supply, so the Vs half of the Vs will be here. So these capacitors are used just to
have a 50-50 source voltage at these two different locations. So so this is the inverter circuit as I shown you. So this is the supply. ये आपके पास एक supply आ गया है और दूसरी supply है. So we will not consider this supply. We just take this supply. अब आपके पास ये दो आपने switches लगा दिए हैं. Sorry, these are the freewheeling diodes or we need to हम आपने switches main switches S1 लगा दिए, S2 लगा दिए. These are the IGBTs. So अब आप क्या करेंगे? So you made the inverter circuit. Now you have to connect the load. So you have to connect. So हमने क्या किया यहाँ पर? Please remember here the T1 is the first terminal of the load. So we will measure voltage by taking this T1 as a reference point. So always, okay. Okay. So the operation is simple. First we will turn on S1 and second we will turn on. Sorry, first we will turn on S1 while keeping S2 off, and similarly the vice versa. So this is the status of the half bridge inverter operation. The switch S2 is off. So all these things are written here. How the current will flow, I think I don't need to read because you must understand all these things. So the first thing is when we turn on S1 or S2 off है. So when we turn on S1, the current will so this will act as a source of supply. Ignore this one. इसको आप ignore कर दें. So this becomes a loop like this one, a closed loop. और इसमें जो supply है, that is only this supply, and this is assumed in the book as I think 100 volt, or just take it as a Vs by 2. So because this S1 is on, so the current will flow from here to here. Let's say ये loop बन जाएगा. Why current will not flow downward? Because the switch is off, right? And why current will not flow to this point? Because this anode is disconnected. Sorry, this is reverse bias. Again, why this current will not flow through the diode D1? Because this diode D1 is reverse bias. So the only path when we switch S1 turns on, the only path the current finds is this, from plus to minus. So in this case, T1 of the load will become plus, so the voltage will be plus. Okay. And now in this case, connect again the load. So the load is connected with this, but this time this transistor is turned off and this transistor is turned on. So what will be the path of the current? Because this is a second loop, because we are saying that S2 is on. S2 is on, तो क्या ये S2 on हो जाएगा? Yes, on हो जाएगा, क्योंकि the source supply plus is connected with this collector. Of course, it has to turn on, and you are supplying the signal at the S2, so this will turn on. So the current path will be like this one. The plus current will flow from here to the load through the switch, and now you take that your plus है, why it will not flow through the diode? Because the plus, this is the supply plus, and this diode is connected in the reverse bias, so it will not turn on, right? Similarly, the plus always the current flow from plus to minus. So this is plus and this is minus. The current will find its path. The current will not flow to this one. The current will not flow to this one. Current will not flow through. Current will always flow from. So in this case, what we see, the plus is at T2. ये T1 था और plus T2 पे, so supply is reverse bias here. So the output voltage will be in the negative direction. So this is the signal. This is the signal at you have to draw the waveforms always in synchronize by drawing
vertical dotted lines that all these signals are synchronized. So now signal number 1 S1 means signal number 1 S1 को हमने signal दिया है. So this will turn on and the current will flow in the positive direction. So the voltage will be positive. तो आपने यहाँ पे देखा voltage positive. अब इस point पे S1 is off है, S1 off है, S1 S2 on है, तो S1 यहाँ पर off है और signal S2 on है. So the current will be in the negative direction. So whenever the S1 is turned on, the voltage and the current will be in the positive direction, and whenever the S2 is on, the voltage and the current will be in the negative direction, as we can see from this graph. Now, so you know that ये signal 1 है, signal 2 है, and the voltage across R is this one, plus, and it will go to the minus. So it's symmetric in the wave shape. So now about the current S1, how you can say that what is the current through the S1. Okay, so the first for the positive half cycle, sorry, yes, you can say positive half cycle, but we should say that when the signal S1 is on. So जब ये transistor S1 on है, तो current through S1, do you think it will exist or not? S1 कहाँ पर है? S1, this is the supply. So if this is S1, so of course, and this is on, of course the current will flow through the S1. So the current through the S1 will only flow whenever the S1 is on, completely on. So if S1 on है, so current through S1 is, yes, it will be positive. And जब S2 on होगा, so current through S2 will exist. ठीक है ना? Now we have to see कि current through X2, should it be in negative direction or should it be in the positive direction? Now it's time. I leave this question to you. Think about this one. My question is कि जब S1 on था, whenever the S1 was on, the current through the S1 was positive. ठीक है. अब मैं आपसे ये क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि whenever the S2 is on, तो क्या करंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? It will be positive. It will be positive. वोल्टेज तो नेगेटिव है यहाँ पर. Please remember the voltage is negative. When the switch S2 is on, the voltage across the load is negative because of this sign. But the current flows due to this voltage. This is the source of the supply. The current through S2 will always flows from plus to minus. So the plus. So yeah, इस वजह से current through the S2 will be positive. It will not be negative. Remember, these are the important points. Now it's time for the attendance. Oh my God, the PC is off. I'm just turning on the PC. So if someone ask any question or if you have any confusion, these are the from the root level. So you may consider that okay, these are the very big stuff for the very beginners. But this is the foundation that we want to make, that every student should have very good foundation. If you have any question, please ask. Now next. Okay, the current through R. तो ये देखें, ये voltage through R ये था, ठीक है, and current through R is there. So both are basically in synchronize. ये जो है, ये voltage जो था ये voltage और ये current. So this is the voltage waveform across the load, ठीक है, and this is the current waveform through the load.
always use the word across for the voltage and the word through for the current, because it through. So this is the, so what is the difference between these two? These two are completely synchronized with each other. There is no phase difference. If this is plus, this is also plus. If the voltage starts at this point, the current also starts at this point. It means these are completely synchronized. If the voltage stopped at this point, the current also stopped. So the shape of the waveform for the voltage and the current will remain same, because the load is the resistive. This is the important factor. We will recall this later on जब मैं आपको inductive load पढ़ाऊंगा, probably maybe in this lecture. So whenever we will study the inductive load, we will tell you the resistive load, current to the resistive load, and the voltage across the resistive load is having the same shape. They are in phase with each other. Okay. Hopefully there is no question. Okay, so this is the review, and we have to start करते हैं इसको. So now the new slide, and now my PC is turned on, so I must have to take the admission, oh sorry, attendance. Okay, I think it's taking a little bit more time. Recording on here, recording भी on है, share और ये screen. Okay, so now the F5. This is next lecture, power electronics, inverter circuit and waveform. Again, we will try to focus on the inverter circuit, waveform, and a few numerical examples. Yes. So this is again the same circuit I have taken from the Ashfaq Ahmad. Aha. Okay, this is the example 10.1, and you should recall that is this uh, half bridge or the full bridge? So I have to ask from you. This lecture is one online. Yes, Mujibur Rahman. It's attendance and the question answer session. Mujibur Rahman. Yes, sir. एक मिनट आपके पास क्यों आ रही मुझे? Yes. Yes, Mujibur Rahman, please answer me. Is this if this is an inverter circuit, please tell me, is it a half bridge or full bridge?
सर ये मेरे पास जो है हाफ है फुल है? ओके, सर ये फुल ब्रिज हो फुल ब्रिज, ओके। मुबशिरा ज़ैब, मुबशिरा ज़ैब, प्लीज रिप्लाई, this is your attendance, and as well as I want to know some answer from you. So Mubashira Zaid, absent. That's not a good thing. Saad Khan, Saad Khan, absent. Sirat Batul, Sirat Batul, absent. No excuse. Agha Nabil Ahmed, Agha Nabil Ahmed, Agha Nabil Ahmed. Fawadul Hassan, Fawadul Hassan. Sayyid Waleed Ahmed. Sir. जी ये बताइए, ये जो if this screen is visible to you, please let me know if this is a half bridge inverter or a full bridge inverter. Sir, half bridge inverter. Very good answer, good answer. So this Mujibur Rahman आपके लिए है स्पेशली, एंड ये दिस इज एन हाफ ब्रिज इन्वर्टर। क्योंकि ये देखें, ये जो है ना डायोड, दिस इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, ठीक है ना, ये भी तो बेसिकली आपके पास जो ये तो आपको कनेक्ट करना है ना, या आप अगर आपको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको निकाल दें, तो दिस इज बेसिकली हाफ ब्रिज। इसमें सिर्फ दो ही स्विच है, SCR1 and SCR2। whenever the SCR1 will turn on, the current will flow in this direction. Whenever SCR2 will turn on, the current will flow in this direction. So this is basically the half bridge inverter. Okay, सैयद किसने जवाब दिया था ये अभी? सैयद वलीद अहमद ने जवाब दिया था। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मोहम्मद जहाजेब, प्रेजेंट सर। मोहम्मद जहाजेब भी बताइए कि हाफ ब्रिज इन्वर्टर है या फुल ब्रिज इन्वर्टर है ये? सर हाफ ब्रिज। क्यों? ठीक है, यहाँ पर तो ये भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, 1 2 3 4 डिवाइसेस लगे हुए हैं, ये हाफ ब्रिज है। देखें, ये बेसिकली ये जो डायोड है ना, इसको आप इग्नोर करें फर्स्ट इंस्टेंट, ये रिवर्स में कनेक्टेड है। कोई भी आप स्विच बनाएंगे उसके रिवर्स डीसी स्विच है, रिमेंबर इट्स नॉट द एसी स्विच, क्योंकि करंट यहाँ से एनोड से कैथोड ही की तरफ फ्लो होगा। सो दिस इज प्योरली डीसी स्विच। व्हेनेवर यू हैव अ डीसी स्विच, you always connect a diode in the reverse bias so that the reverse current will easily flow. So ये तो डायोड है जो कि इसके रिवर्स बायस में कनेक्ट है। This is the second diode. This is also connected in reverse bias. So you can just remove this. आप इसे ना इसे रिमूव कर लें यहाँ पर से, सॉरी, आप इसे आप यहाँ से, अब बताएं, अब ये खत्म हो गया, अब बताएं कि ये हाफ ब्रिज है या फुल ब्रिज है? मोहम्मद जहां से आपने बता दिया। सैयदा उरूबा, सैयदा उरूबा एब्सेंट। फहद मुख्तार, Yes, sir. जी फहद मुख्तार, ये हाफ ब्रिज है या फुल ब्रिज है? Sir, half bridge ये obviously question में ही लिखा हुआ है half bridge. नहीं, फर्स्ट के क्वेश्चन में नहीं लिखा, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना, मैं तो सर बेसिकली half bridge अंडरस्टैंडिंग है लेवल जिसमें अंडरस्टैंड। डायोड रिवर्स उसमें डायरेक्शन में कनेक्टेड है ना उसके साथ SCR के साथ, तो इसलिए सर हाफ ब्रिज है क्योंकि फिर वो नहीं, रिवर्स अगर डायोड ना करंट कनेक्ट विल हो फ्लो तो नहीं, डायोड अगर मैं आपसे ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखें, ये डायोड जो है ना रिवर्स बायस में, ये ऑलवेज कनेक्ट होगा। सो डोंट कंसीडर दिस डायोड एज एन कंट्रोलिंग एलिमेंट, ठीक है ना।
आप अगर आपको समझ में मुश्किल हो रही है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू इग्नोर दिस डायोड, क्योंकि ये जो रिवर्स बायस में कनेक्ट है इसको तो आप इग्नोर कर दें। तो नाउ द मेन सर्किट इज दिस वन, बस Yes. ये मेन सर्किट है। इस मेन सर्किट में नाउ इट्स वेरी क्लियर टू यू, दिस इज गोइंग टू बी द हाफ ब्रिज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो कंट्रोलिंग डिवाइसेस SCR1 SCR2 इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई ये भी तो इस्तेमाल हो रहा है, बोलो कि ये तो इस्तेमाल हो रहा है, बट दिस इज जस्ट is acting as a free wheel diode। ये आप कनेक्ट करें ना करें, ये तो एक प्रोटेक्शन है। फ्री व्हील डायोड is basically protection for the for the case when the load is resistive load। आप ये कनेक्ट करें ना करें, ओके, अदरवाइज कनेक्ट आपको करना ही करना, बट दिस इज नॉट गोइंग to be important for the name of the circuit, because any device when you connect any switch, so आपको इस स्विच के क्रॉस रिवर्स में डायोड लगाना होता है। So this is not protection के लिए, and later on we will also say this is not only used for the protection, but this is also used for the proper operation of the inverter। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको फ्री व्हील कहने से भी थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, हेसिटेट कर रहा हूँ, बट यू कैन से लेटर ऑन आपको पता चलेगा। सो दिस इज जस्ट यूज्ड एज अ प्रोटेक्शन हियर फॉर द टाइम बीइंग। सो आप ये देखें यहाँ पर सिर्फ ये आपके पास दो हैं, तो ये करंट हाफ ब्रिज इन्वर्टर, राइट। थैंक यू। सैयद उर्वा फहद मुख्तार ने बता दिया। फहद मुख्तार, फहद मुख्तार। Yes, sir. Yes, ओके, sir. सैफ हुसैन, सैफ हुसैन एब्सेंट। अदनान खालिद खान, अदनान खालिद खान। हिमायू अरशद। जी सर। जी हिमायू अरशद, ये आप आपसे मैं क्या पूछूं कि ये जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर है इसमें ये तो मैंने यहाँ पर दो डीसी सप्लाई कनेक्ट किया ना, फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट 100 वोल्ट, तो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज कभी प्लस हो जाती है और कभी माइनस, एज इफ आई कैन शो यू। ये देखें मैंने शायद पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में। तो ये बताएं कि यहाँ पर ये पॉज क्यों आ रहा है, व्हाई दिस इज अ पॉज। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर तो ठीक है, मैक्सिमम है, एंड दिस आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू द प्लस ई। प्लस ई क्यों है कि ये जो लूप है इसमें ये जब स्विच ऑन हो गया तो प्लस ई इज कनेक्टेड डायरेक्टली विद द लोड, सो वी हैव प्लस ई। अभी बताएं ये यहाँ पर जीरो क्यों हो रहा है, बैलेंस क्यों नहीं है ये चीज। सर क्योंकि हमारे पास जो है दोनों सप्लाई से माइनस माइनस आ रहा है इसमें, और सर मतलब करंट एक कंप्लीट डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रहा है। जैसे प्लस माइनस हो रहा है या माइनस प्लस हो रहा है तो सर उसको पूरी कंप्लीट पाथ मिल जाती है फ्लो होने के लिए। अच्छा लेकिन ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू भाई अर्शद साहब। अच्छा हसन अली शाहिद, नईम अहमद, नईम अहमद प्रदम सर। मौजूद है। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, तो नईम अहमद ये बताएंगे इस टेबल के हिसाब से बताइए। प्लीज वॉच दिस इज टेबल 2 एंड लेट मी नो व्हाई दिस इज जीरो हियर। सर ये why it is zero here? पहला पार्ट देखें फर्स्ट स्टेट में, दोनों ऑफ हो गए ना यार। फर्स्ट स्टेट, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फर्स्ट स्टेट में देखें SCR1 ऑन है और SCR2 ऑफ है, ये ऑन है और ये ऑफ है, तो करंट यू फ्लो होगा, बिल्कुल होगा, करंट इज पॉजिटिव। एंड सेकंड स्टेट में द स्विच इज इन द सेम पोजीशन, ऑन ऑफ जो पहले था वही है, अभी भी वही है, सो तो करंट विल बी पॉजिटिव। तो ये वोल्टेज है आपके पास यहाँ पर प्लस ही आ गया।
ये एक स्टेप आ गया, दूसरा स्टेप आ गया। अब तीसरा थर्ड स्टेट में बोथ द स्विचेस, यस यू आर करेक्ट, कि थर्ड स्टेट में दोनों के दोनों स्विचेस ऑफ है। जब ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है, तो जब ये ऑफ है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब ये ऑफ है तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस वन विल बी जीरो, सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज जीरो हियर। ठीक है हो गई मार्क अटेंडेंस सर? जी, अटेंडेंस मार्क हो गई मेरी? हाँ जी, हाँ जी। Yes. औसाफ अली खान, औसाफ अली खान जल्दी बता दे यार, वो जो पढ़ाना भी है। ओके, आई एम नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। मोहम्मद फजील राजा, मोहम्मद यस फजील सर, राजा, यस सर। ठीक है। शहजाद अहमद खान, काशिफ नजीर, इबाद अहमद मुफ्ती, इबाद अहमद मुफ्ती, हाफिज मोहम्मद हमजा, मोहम्मद रिजवान, रुमैज अली, प्रेजेंट सर। मोहम्मद मुरसलीन, मोहम्मद मुरसलीन, वजाहत अली। सर वजाहत अली का मैसेज आया कि उनकी लाइट चली गई है, पहले वो ऑनलाइन थे। अच्छा ठीक है। उमर खान, प्रेजेंट सर। मोहम्मद वकास, प्रेजेंट सर। हारिस महमूद, यस सर। सर प्रेजेंट सर। सर ठीक है काशिफ ठीक है। प्रेजेंट। असद बट, प्रेजेंट सर। सर हाँ हाँ, मैं अभी कॉल करता हूँ नाम दोबारा। निहाल अहमद, सर वो दरअसल मैंने कोई निहाल अहमद, निहाल अहमद, मोहम्मद मुताहर, मोहम्मद मुताहर एंड हसीब रऊफ अब्बासी। प्रेजेंट सर। ओके, अब आप लोग सुन लें, एब्सेंटीज के नाम में कॉल कर रहा हूँ। मुबशरा जैद, अगर आप लोग आ गए हैं तो मुझे बता दी ताकि आई कैन मेक करेक्शन। मुबशरा जैद, साद खान, दीज आर एब्सेंट। सीरत बतूल, आगा नबील अहमद, फवादुल हसन, सैयद उरूबा, सैयदा उरूबा सॉरी, एंड सैफ हुसैन, अदनान खालिद खान, हसन अली शाहिद, औसाफ अली खान, शहजाद अहमद खान, काशिफ। प्रेजेंट सर। कौन है? काशिफ सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, शहजाद काशिफ नजीर प्रेजेंट है। सर ओके वो दरअसल हैंड फ्री में मसला है ओके, इसलिए नो आवाज प्रॉब्लम, नहीं नो आती प्रॉब्लम, उसके बाद। नो प्रॉब्लम। इबाद अहमद मुफ्ती एब्सेंट है, और हाफिज मोहम्मद हमजा एब्सेंट है, मोहम्मद रिजवान एब्सेंट है, मोहम्मद मुरसलीन एब्सेंट है, निहाल अहमद एब्सेंट है, मोहम्मद मुताहर एब्सेंट है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस अटेंडेंस। Okay, so we continue now. So, but Bismillahirrahmanirrahim. So मेरे ख्याल में चूंकि there were some confusion when answering the question, okay, the question was if this is a half bridge or the full bridge. So please remember, once again I'm trying to say you,
and you can see the previous slide. I mean the previous lecture slide. Over there, I have clearly shown you. I removed first this part and told you this is the half bridge inverter. And also later on, I connected these freewheeling diode in the opposite direction. And then again, I told you this is the half bridge inverter. So please remember the difference between the half bridge and the full bridge. Now it's time to understand the full bridge inverter. Discard करते हैं इसको आप पहले, and then we will continue. So these things you need to read. Often while designing in the microcontroller based system or the FPGA based system or the software based system, we always take the support of the table. तो ये चीजें ना टेबल आप बना लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आप इसी टेबल के मुताबिक आउटपुट वेवफॉर्म एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. First you made this table and according to that table आप क्या करते हैं कि अपनी वेवफॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं. What we have here. Yes, so we understand now कि we need this. और आप क्या करते हैं उल्टा कर लेते हैं. आपको जो आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करनी होती है कि भाई हमें तो यार ये वाली आउटपुट चाहिए. ओके, इफ यू वांट दिस आउटपुट, और कस्टमर आपसे ये कह देगा कि भाई आपको ये आउटपुट चाहिए, आप इसके लिए मुझे इन्वर्टर डिजाइन करके दें. आई एम जस्ट टेकिंग as an example. If someone say you please, I want this output voltage from my battery 12 volt DC और 24 volt DC मेरे पास बैटरी, मुझे भाई ये आउटपुट चाहिए. So आप उसके ये आउटपुट ले लेंगे and you will first transform this output in this table. In this truth table, the state 1 आप इसको 1 state कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, या टाइम बना लें T0, T1, T2. So you draw this table and then you can construct the. Then आपके पास इन्वर्टर था, मैंने बताया इन्वर्टर इज अ वेरी बेसिक सर्किट, जस्ट वायर्स हैं. अब लोड को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? बाय कंट्रोलिंग दिस स्विच एंड कंट्रोलिंग दिस स्विच. तो इन स्विच को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त इस स्विच को इस स्विच के गेट पे सिग्नल देना है और किस वक्त इस स्विच के गेट पे सिग्नल देना है. That is determined by this table. So now we move to the अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर शायद हमने यहाँ पर टाइम स्टेट लिख दिया है, ये 1 स्टेट है ना. तो because why we have seen this one डबल क्योंकि प्लस ई दोनों दफा एक ही जैसा है, तो हमने यहाँ पे स्टेट 1 लिख दिया, स्टेट 2. तो दोनों स्टेट में ये प्लस प्लस है. And this is the third state and the 4th, 5th, 6th, 7th. Yeah. So remember these things and the time period is this only. यहाँ से फिर recycling start हो जाएगी. So now ये अच्छा ये क्या है, ये तो दोबारा नहीं है. Okay. Actually this was an example. आपको बेसिकली ये बताया गया कि you are asked to solve this example. इस एग्जाम्पल में the single phase half bridge inverter produces a step wave output. ठीक है, step wave across a resistive load E is equal to 100 volt. यहाँ पे ये 100 volt है and this is also 100 volt. K means ये शायद बुक में उन्होंने D दिया होता है, I replace it by K. K means duty cycle and 50%. Means ये जो ऑन और ऑफ हो रहा है वो स्विच वो 50% पे हो and load is equal to 1 ohm. पहले आपको क्या करना है, प्लॉट द वेव फॉर्म्स एज पर टेबल 2. इस टेबल 2 के मुताबिक वेव फॉर्म ड्रॉ किया and you have drawn this waveform. So you answered the first part. Plot the waveforms as per table 2 for the output voltage. आपको आउटपुट वोल्टेज के लिए वेवफॉर्म ड्रॉ करना है. For the voltage across the SCRs, okay. So this is not enough. आपको तो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, ये आपने ड्रॉ कर दिया. For the output voltage, the voltage across the SCR,
इसके क्रॉस ये जो वोल्टेज, ये जो SCR है ना, इसके क्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉ करने हैं। So, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉ करने। ये वेवफॉर्म किसके क्रॉस है? आउटपुट वोल्टेज, यानी कि ये वेवफॉर्म इसके क्रॉस वोल्टेज है। नेक्स्ट आपको क्या कहा गया है? द वोल्टेज अक्रॉस द SCRs मींस इस SCR1 के अक्रॉस भी वोल्टेज मालूम करना है और इस SCR2 के अक्रॉस भी वोल्टेज मालूम करना है। एंड दीज आर वेरी सिंपल। आपको पता है ये SCR अगर ये स्विच ऑन है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितने होंगे? 0 होंगे। ऑफ है तो सप्लाई वोल्टेज होंगे। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, एंड द सोर्स करंट, ओके, और आपको सोर्स करंट I1 एंड I2 के भी वेवफॉर्म ड्रॉ करने हैं। सो कितने वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करने हैं? आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, SCR voltage waveform, SCR2 voltage waveform, and the current I1, I1 का है ये है, इस करंट का वेवफॉर्म ड्रॉ करना है, एंड I2 इस करंट का वेवफॉर्म आपको ड्रॉ करने हैं। इसके बाद क्या करना है? फाइंड दी मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज दैट द स्विच मस्ट विथ स्टैंड, यानी कि ये जो SCR है, स्विच है, इसके मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज कितने होने चाहिए। नंबर 2, फाइंड द एवरेज लोड करंट, average load current पता करना। This is the numerical example. Find the average switch current. Average load current का मतलब क्या हो गया? लोड करंट यहाँ पर जब ये ऑन होगा तो प्लस में होगा, ये ऑन होगा तो माइनस में होगा, तो एवरेज निकालना है। ठीक है, मीन्स RMS वोल्टेज आपको निकालने होंगे। फाइंड द एवरेज स्विच करंट, फाइंड द पावर डिलीवर टू द लोड, इस लोड पे कितनी पावर डिलीवर की जा रही है। How much power is being fed to this load with these conditions. So it's a good numerical example for the better understanding of the half bridge inverter. Now let's move. So I think this is the reason I have drawn it once again. अच्छा, अब हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। किस के? आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। दिस वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस वन। अब आपको SCR1 के क्रॉस वोल्टेज वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। लेट्स सी। दिस इज द ऑन स्टेट। कौन ऑन स्टेट है? SCR1 यहाँ पर ऑन है और इस जगह पे SCR2 ऑफ है और इस जगह पे बोथ आर ऑफ। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट साइकिल, इफ एस, अब आप प्लीज फोकस दिस SCR, आपको इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम करने हैं, तो यू मस्ट हैव सम फैक्ट्स अबाउट दिस स्विच। इफ SCR1 ऑन, I1 flows and V output equals to plus। अगर SCR ऑन है तो जाहिर बात है कि आउटपुट, SCR ऑन है तो आउटपुट वोल्टेज प्लस E के बराबर हो जाएंगे। सही है। और I1 will flow, yes, I1 इस तरफ फ्लो होगा, right? So I1 is in this direction, I1। if SCR1 off, SCR1 off है and SCR2 on, ये on है, then output voltage is equal to minus E। okay, we discussed V out will be 0 if current through the load is 0। neither of the। now the waveform for the SCR1, please try to understand this। SCR1 के क्रॉस वोल्टेज कितने हैं? जब ये SCR1 यहाँ पर ऑन था, जब SCR1 यहाँ पर ऑन था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितने आएंगे? 0 आएंगे। That's why the voltage is 0। So the fact is SCR1 is voltage across the SCR1 is 0 if it conducts। ये conduct कर रहा है, voltage 0 होगा। That's simple। We are not understanding a scientific very hi-fi things। It's just simple। इसके बाद क्या हो गया कि ये वोल्टेज 0 है यहाँ पर, मींस बोथ द SCRs आर ऑफ। जब बोथ द SCR ऑफ है तो SCR1 के क्रॉस वोल्टेज ये क्यों आ गए? Why this is this voltage? क्योंकि ये भी SCR इस पीरियड में क्या है, दोनों ऑफ है, ये भी ऑफ है, ये भी ऑफ है। तो ये इस ऑफ होने का मतलब ये हो गया लाइक दिस इज लाइक एन ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट है तो यहाँ वोल्टेज कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम हो जाएंगे जो सप्लाई वोल्टेज है। प्लस यहाँ से है और माइनस यहाँ से है।
So the supply voltage will be plus E. Similarly, the supply voltage will be E. If the SCR is off, so the voltage across this, because this is an open circuit, the voltage across this will be the supply, the maximum voltage, as you already know about these things. तो voltage across SCR1 आपके पास maximum हो जाएंगे. Now, so the statement is voltage across the SCR1 is plus E if both SCRs are off. दोनों के दोनों ऑफ होंगे तो voltage across the SCR1 भी plus E होगा and voltage across the SCR2 भी plus E होगा. So we will see it. But because we are just focusing the SCR1, so we have to limit this one for specifying only the SCR1 voltage and the current. Next, what happens now? कोई आप में से कोई बता सकता है कि जब यहाँ पर तो दोनों के दोनों ऑफ हो गए, अब सिर्फ SCR2 यहाँ पर ऑन है and the load voltage is minus. Yes, SCR2 on है, अब करंट जो रिवर्स में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज माइनस में आ गए. अब आप में से कोई बता सकता है कि इस SCR1 पे कितने वोल्टेज होंगे? If any one of you can answer me. SCR1 देखें जो 50%. लेट्स सपोज प्लस ई है ये यहाँ पर ना, तो यहाँ पर इस कंडीशन में तो प्लस ई आ गए थे. अच्छा, योर आंसर लुक्स समथिंग लॉजिकल, क्योंकि आपने शायद इसलिए बताया 50%, आपने पता नहीं कैसे बताया. ओके, मे बी इट्स सॉरी वो सोर्स का अच्छा. ओके, लेट आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ये लेट्स अगेन स्टार्ट. SCR1 के क्रॉस जब ये SCR1 कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्टर है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज 0 हो जाएंगे. ठीक है. SCR1 जब ऑफ हो गया, इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएंगे. ओके, गुड. नाउ SCR1 इज ऑफ बट द सेकंड SCR इज ऑन. ये ऑन है. अब आप ये सपोज करें, मैं यहाँ पर वो पॉइंटर लेता हूँ एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ठीक है, जब मैं ये कह रहा हूँ ये SCR ऑफ है, इसका मतलब यहाँ पर ये ओपन सर्किट हो गई. ठीक है ना, यानी कि ये इस तरह हो गई, ये इस तरह हो गई, ये ओपन सर्किट हो गई. ये भी मीन्स ये ओपन सर्किट हो गई. ठीक है, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें दी SCR2 इज ऑन. SCR2 ऑन है, जिसका मतलब ये क्या हो गया, ये जंप हो गया. मीन्स दिस इज अ क्लोज, दिस इज अ कंडक्टर. अब कंडक्टर होगा तो अब आप देख के बताएं कि ये ओपन है ना, यानी कि ये यहाँ पर कनेक्ट नहीं है और ये शॉर्ट सर्किट हो गया है इस कंडीशन में. अब वोल्टेज बताएं कितने बनेंगे इसके क्रॉस. मैं अगर यहाँ पर मीटर रख रहा हूँ, मीटर की प्लस लीड मैंने यहाँ रखी है और माइनस लीड यहाँ रखी, क्योंकि मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है. नाउ इफ समवन कैन आंसर मी. मैक्सिमम सोर्स ई प्लस होंगे. ई प्लस होंगे, यानी कि इसके मुताबिक आप ये कह रहे हैं प्लस ई होंगे. यस सर. प्लस ई होंगे. आप ये करें यहाँ पर भी प्लस ई होंगे, और जब ये स्विच ऑन हो जाएगा सेकंड वाला, तो यहाँ पर भी प्लस ई होंगे. ओके, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्स, और एटलीस्ट कंसिडरिंग दिस सर्किट. नाउ आई एक्सप्लेन यू. देखें, इसका मतलब ये हो गया, अगर आप मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूं यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपके पास देखिए, मैं असल में आपसे ही आंसर चाहता हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ. ओके, सपोज दिस इज बैटरी में, और ये छोटी बैटरी है, ये आ गया, ये प्लस ई है, and this is also
दिस इज ऑल्सो प्लस ए, ये दोनों आपके पास ई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये प्लस ये किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर ओपन सर्किट है, SCR1 ओपन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये लाइन आ गई और यहाँ पर SCR2 था जो कि शॉर्ट है, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक दिस। अब आप बताएं यहाँ पर कितने वोल्टेज होंगे। ये क्या, पहले तो आप ये यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो मैंने सर्किट ड्रॉ की क्या सही किया है। अच्छा, वी आर जस्ट रिमूविंग दिस वन, क्योंकि ये लोड है। द करंट ऑलवेज फाइंड द लोएस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो करंट जो भी ये सेटअप है, ये ऑफ है और ये ऑन है, सो वी हैव टेकन दिस वन। अब इस कंडीशन में ये बताइए कि मैं यहाँ पर मीटर की प्लस लीड लगा रहा हूँ और इस जगह पे मीटर की माइनस लीड लगा रहा हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ से ये मीटर क्या रीड करेगा। सर जितना भी वोल्टेज होगा वो ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम। सर जितना भी वोल्टेज होगा वो यहाँ पे ड्रॉप होगा। हाँ, तो कितना वोल्टेज है बता दें आप। सर वोल्टेज गिवन ई जो वोल्टेज है इसे देखें ई दोबारा। प्लस एग्जैक्टली, E प्लस सी, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। बस देखें, कुछ लोगों को ना वो सर्किट बहुत मुश्किल लगता है, वो यही वजह है कि वो सर्किट को सही से नहीं देख रहे होते हैं। तो दिस इज जस्ट वेरी सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट। ये ऑफ है, ये ऑफ है। इसका जो ये टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, इस सप्लाई के साथ कनेक्टेड है। ये टर्मिनल इस सप्लाई के साथ कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ऑफ है ओपन सर्किट। ये टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, ये आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट है बिकॉज दिस इज ओपन। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब मैंने जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाई है, इट्स ओके, इट्स करेक्ट। तो अब इस केस में आप मल्टीमीटर यहाँ लगाएंगे। ये मल्टीमीटर की लीड आ गई, यहाँ पर आपने लगा दिया, ओके लीव इट। तो अब आप मल्टीमीटर यहाँ लगाएंगे तो आपके पास ये मल्टीमीटर का प्लस लीड किसके साथ कनेक्ट है, इस प्लस ई के। लेट सपोज ये 100 वोल्ट है, लेट सपोज ये 100 वोल्ट है, 100 के साथ कनेक्टेड है। और दूसरा किसके साथ कनेक्टेड है, -100 के साथ। ओके, द क्वेश्चन मे बी कि ये दोनों ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। दीज बोथ 100 volt will make 200 volt. Why? Because the supply is connected in series. ये जो connected है इस सीरीज में कैसे कनेक्टेड है, माइनस प्लस से दूसरी बैटरी के माइनस को कनेक्ट कर दिया गया है एंड देन प्लस। तो माइनस प्लस, सो ऑल दीज आर इन सीरीज, ठीक है। तो जब सीरीज में होंगे तो आउटपुट वोल्टेज विल बी 2E, आउटपुट वोल्टेज आपको 2E हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Hopefully you understand this one. If you still have any question, please raise, because this is the important point that I want. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, तो मैं इस वजह से इसमें काफी टाइम लगा रहा हूँ। Although, oh my God, time is too much. Okay, let's we finish this one. I have another class. तो ये देखें ये क्या हुआ, इसमें आउटपुट जो वोल्टेज है यहाँ पर, ये जब ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है, तो दिस वोल्टेज विल बी 2E and the things will be continue. So ये प्लस E है ये वाला and ये वाला प्लस 2E हो गया। That's good answer and thank you for your understanding of this one. So the output voltage, this is not the output voltage, this is the SCR voltage. इसी तरह से बहुत ज्यादा टाइम लग गया यार। ये मैंने SCR1 के वोल्टेज ड्रॉ किए। इसी तरह से अगर आप ये बेसिक चीजें टेक्निक समझ गए आगे, तो SCR2 के भी आप वोल्टेज ड्रॉ कर सकते हैं। SCR2 ये जो SCR2 ये है, इसके क्रॉस वोल्टेज इस तरह बनेंगे, ठीक है ना। ये आप देखें, ये स्टार्ट होगा +2E से। सो आई एम लीविंग दीज थिंग्स टू यू।
I have explained this one, and based on this knowledge I assume कि ये चीजें आप understand कर लेंगे। यहाँ पर देखें ये खुद SCR1 ऑन था और SCR2 ऑफ था, तो मैक्सिमम वोल्टेज है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर SCR1 ऑन है और SCR2 ऑफ है, तो मैक्सिमम वोल्टेज है। सो यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। अच्छा, SCR1 के थ्रू करंट थ्रू SCR1 वेव फॉर्म है। करंट थ्रू SCR1 कहाँ पर है? SCR1 के थ्रू करंट कब होगा? जब ये SCR1 ऑन होगा। दैट्स सिंपल भाई, जब SCR1 ऑन होगा तो करंट, तो ये SCR1 ऑन था, तो यहाँ पर करंट की वेव फॉर्म ऑन आ गई। SCR1 दोबारा ऑन होता है, यहाँ पर है। And the third is this one, current through the SCR2. SCR2 के current through SCR2 will exist only and only if the SCR itself is on. तो SCR2 कब on हो रहा है? ये देखें, SCR2 यहाँ पर on हो रहा है, SCR2 on है, so the only current will be. Okay, the class, I think I have to finish. Okay, finish this last slide. The output voltage has an AC square wave. Yes, the voltage across the open switch is 2 DC supply voltage and 2 E है, ठीक है ना? तो ये चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। एवरेज करंट निकाला गया है, आउटपुट एवरेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो these are just simple numerical examples. Output RMS value, the equation is, or for the output RMS is square root 2 duty cycle multiplied by voltage. तो 100 वोल्ट आ गए। The power delivered to the load is PL is equal to VL IL, दोनों 100 हैं। So this 100 comes from this average load current, and this 100 comes from this average load voltage. तो average load current को multiply कर देंगे, so the output will be 10 kilowatts. So this is the over of this slide, and if you have any question you can ask, otherwise I am leaving this session.